Hello everyone and welcome to Stream Tech Now. So if you're feeling the urge to have a fling and stray on your significant other, well, you should throw on one of these 7 films first and take a cold shower. These 7 movies will quickly change your mind. First up is Gone Girl. This 2014 movie starring Ben Affleck and Rosamund Pike, well, they were the perfect New York couple. They had everything going for them, they had it all. But then suddenly luck changes and things begin to quickly fade. They end up moving to Missouri and the marriage starts to suffer. After the boredom sets in, Nick, played by Ben Affleck, starts to stray and becomes involved in an affair. And then the plot takes a big turn. Now, I won't reveal what happens, but let's just say this is an ultimate story of what a cheating spouse can cause. Lots of anger, lots of distrust, and lots of plot twist. Go check this one out. This is Gone Girl. Many of you will remember this one. This is Revenge, a 1990 film by Tony Scott starring Kevin Costner. He plays Jay Cochran, a newly retired U.S. Navy pilot. He travels to Mexico to spend time with his friend Tibby Mendez, played by Anthony Quinn, a powerful but corrupt businessman that has much of the country in his back pocket. While there, he meets his beautiful wife, played by Madeline Stowe. And by the way, this was one of her first breakout major movies. Now, she's become very unhappy in her marriage. Kevin Costner and Madeline Stowe soon engage in a steamy love affair. But when Anthony Quinn learns of this relationship from one of his henchmen, he sets out to get even with both of them. And let's just say this one will definitely make you flinch several times. This is Revenge. Next up is Derailed. Now, this is a 2005 film starring Clive Owen and Jennifer Aniston. Now, Derailed starts with a man that finds himself in a moderately happy marriage that's been quite strained due to his daughter's illness, which is type 1 diabetes. By chance, one day, he meets Lucinda, which is played by Jennifer Aniston, an attractive and intelligent woman. And the two quickly discover how much they have in common, like their stale marriages. Their interest inevitably leads them to a special meeting in a hotel room, and that's when the story gets, well, derailed. Although it got mixed reviews, I was definitely on the edge of my seat on this one, and I think you'll be interested to see how this all plays out. This is Derailed. Unfaithful. Now, this is a 2002 film starring Richard Gere, Diane Lane, and Paul Martel. Now, this is about a New York woman, played by Diane Lane, with a seemingly perfect marriage, has an accidental encounter with a charming Frenchman. Their physical attraction is immediate, and although she realizes she is risking everything, she cannot help herself from being drawn into a passionate affair. In time, her husband, played by Gere, grows very suspicious. Things are just not adding up. They're not making sense anymore, and eventually confronts her lover with a level of anger he never imagined himself capable of. This is Unfaithful. Disclosure is up next, a 1994 American thriller by Barry Levinson, starring Michael Douglas, Donald Sutherland, and Demi Moore. The film takes place inside a Seattle research and development headquarters in a high-tech corporation. The company is about to be acquired by a larger firm, and the boss, played by Donald Sutherland, stands to make $100 million, so needless to say, he doesn't want to hear any bad news. Meanwhile, Douglas expects a promotion and is shocked to learn it will go to a former lover named Meredith Johnson, played by none other than Demi Moore. Well, the day she gets the job, she calls him into her office for a 7 p.m. conference meeting, pours his favorite wine, and then the plot unravels. This is Disclosure. A Perfect Murder. Wall Street baron Stephen Taylor, played by Michael Douglas, discovered that his wife Emily, played by Gwyneth Paltrow, is cheating on him. But what is even more concerning than her infidelity is the hope of profiting from her untimely death. Well, Emily has millions of dollars, and Steve's own financial empire is collapsing before his eyes. He hires her lover, played by
Viggo Mortensen to murder her. The plan: to stage a break-in that will look like a random murder. Well, this turns out to be far from perfect. This is a perfect murder. Now, I know a lot of you have seen this one, Fatal Attraction. This 1987 film is a very popular thriller that features some excellent acting by Michael Douglas and Glenn Close, who, by the way, read this script in one sitting but almost turned this role down because she didn't want to do the bunny scene. Now, if you've already seen this, you know exactly what I mean when I say the bunny scene. Dan Gallagher, played by Michael Douglas, well, his life is good. He is on the rise at his New York law firm, is happily married to his wife, Beth, played by Annie Archer, and has a loving daughter. But after a casual fling with a sultry book editor named Alex, played by Glenn Close, everything changes. Jilted and turned down by Douglas, Alex becomes unstable. Her behavior escalates from an aggressive pursuit to obsessive stalking. Dan realizes that his main problem is not hiding his affair, but rather saving himself and his family. This is so very intense. If you haven't seen this, you definitely need to check this one out. This is Fatal Attraction. Well, there you have it. 7 films you should watch if your eyes are starting to look elsewhere. So as a quick recap, the first one was Gone Girl. Next we had Revenge. Then we had Derailed, and Unfaithful was up next, followed by Disclosure. After that, we had A Perfect Murder, and finally, it was Fatal Attraction. So, thanks so much for joining us today. Can I take you somewhere? You are so going on a date with Will Traynor. I have become a whole new person because of you. A few months ago, I met Jack. So it lasted 6 hours. What lasted 6 hours? A puppet show that Auntie Bridge went to. Give her a little kiss, on the forehead there. I was talking about the baby. Mark, my ex, and I had similar relations. Mr. Darcy. Being loved by you allowed me to feel again. I know you're going to be a wonderful partner. Oh, my dada, with love forever and ever and ever and ever. You guys know how I am with women. As soon as I have sex with them, it's like all of my interests magically disappear. Time to grow up. Doesn't it get old? Nope, it stays right around 20. Wow. It's not whack. That chick, she got you good. This girl is amazing. When she walks in the room, it's special. Your dog knocked off my dog. I take full responsibility. I've talked to him so many times about using protection. Oh, my God. I'm kidding. What are you doing? Walking towards you, see? Why? Because if I ran, it's scary. Because you bother me. Wow. Every male-female friendship, there's total number of drinks. 4, 5. And if you hit that, it means you will definitely have sex. If I had more than 5 drinks, I'd hook up with you. My drink number is 27. I wouldn't even touch myself on less than 24. The thing about being single is, you should cherish it. Oh my God, stop having a moment. How come you're not in school? I'm a model. Cool. Do you want to be in a video for my band? So if you're in a band, sing me a song. Take on me. Are there more beautiful girls in Hollywood or New York? Why? Is that how you'll decide where you'll live?
You're very beautiful. I'm seeing someone. Oh, unrequited love kills more people in any year than tuberculosis. Don't you want to try me? Listen, I'm so lonely. I would have been happy just to talk, but now I'm even too tired for that. क्या आपको रोमांटिक मूवीज देखना पसंद है? मैं बात कर रहा हूँ हॉलीवुड रोमांटिक मूवीज की। तो पिछले काफी वक्त से मैं मूवीज देख रहा था, हालांकि देखता ही हूँ, पर मैंने हॉलीवुड की रोमांटिक मूवीज इतनी ज्यादा नहीं देखी थी। पर अब तक मैंने बहुत सारी अच्छी मूवीज देख ली हैं, जिसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा मजा भी है और बहुत ज्यादा खुशी भी हुई है। और आज मैं आपको 5 ऐसी रोमांटिक मूवीज बताऊंगा जो आपको जरूर देखनी चाहिए। अब कुछ में कॉमेडी भी है और कुछ में साइंस फिक्शन भी है, तो लिस्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन इस रोमांटिक सफर को शुरू करने से पहले प्यार से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी ऑन कर दो, ताकि आप हमारी कोई वीडियो बिल्कुल भी मिस ना कर पाए। तो बिना किसी इंट्रो के आज के धमाकेदार वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5 पे 2011 में रिलीज हुई रोमांटिक मूवी वन डे, जिसमें हमें एने हाथावे के साथ जिम सर्ज लीड रोल में दिखे थे, जिसे डायरेक्ट किया है डेविड निकोल्स ने। अब फिल्म में 2 कैरेक्टर्स रहते हैं, डेक्स्टर और एमा, जो कि यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि वो हर साल 15 जुलाई को एक दूसरे से मिलेंगे। करीबन 18 सालों के बाद उन दोनों की लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। इसे आप वन साइडेड लव स्टोरी टाइप समझ सकते हैं, पर मूवी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आपके पेशेंस को पूरा टेस्ट करेगी। और अगर आप एक अच्छी रोमांटिक मूवी देखना चाहते हैं जिसमें लड़का अमीर और लड़की हार्ड वर्किंग, तो ये मूवी बेस्ट है। और भी स्टोरी में बहुत कुछ है जो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है। नंबर 4 पे 2009 में आई रोमांटिक कॉमेडी मूवी द प्रपोजल, जिसमें हमारे डेडपूल, रयान रेनॉल्ड्स और सांड्रा बुलॉक लीड रोल में नजर आए थे। और पर्सनली मुझे मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई है। इसे डायरेक्ट किया है एने फ्लेचर ने। अब मूवी का प्लॉट ये है कि एक कैनेडियन एग्जीक्यूटिव, जिसे पता चलता है कि उसे अपने देश भेज दिया जाएगा क्योंकि उसके पास यूएस सिटीजनशिप नहीं है, और अगर उसे कनाडा जाना पड़ता है तो उसकी एडिटर इन चीफ की नौकरी चली जाएगी। और इसी से बचने के लिए वो रयान रेनॉल्ड्स, जो कि उसी के साथ काम करता है, उसे शादी करने का ऑफर करती है। अब इसके बाद क्या होगा उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और सैडली ये मूवी इंग्लिश में है, तो आपको सबटाइटल के साथ इसे देखना पड़ेगा, पर मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि इस मूवी को जरूर देखिएगा एक बार। नंबर 3 पे हाउ टू लूज अ गाय इन 10 डेज। अब इसका टाइटल ही मूवी के बारे में बहुत कुछ बताता है। मूवी में आपको इंटरस्टेलर स्टार मैथ्यू मैकॉग्नी और केट हडसन देखने को मिल जाएंगे। अब मूवी का स्टोरी ये है कि बेंजामिन, जिसका रोल मैथ्यू मैकॉग्नी प्ले कर रहे हैं, उसे चैलेंज दिया गया है कि उसे एक लड़की को अपने प्यार में गिराना है, तभी जाकर उसे एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। पर दिक्कत ये है कि उस लड़की की प्रॉब्लम भी है कि उसे बेंजामिन से ब्रेकअप करना है 10 दिन में, ताकि वो अपनी आर्टिकल हाउ टू लूज अ गाय इन 10 डेज को खत्म कर पाए। तो एक तरफ जहाँ लड़का उसे मनाने की कोशिश करेगा, वहीं लड़की रिलेशनशिप तोड़ने की। और ये मूवी आपके लिए एक परफेक्ट रोमांटिक कॉमेडी मूवी होने वाली है। और खुशी की बात ये भी है कि ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है, जिसे आप चाहें डाउनलोड कर सकते हैं या नेटफ्लिक्स से देख सकते हैं। नंबर 2 पे 2006 में रिलीज हुई रोमांटिक फैंटेसी मूवी द लेक हाउस, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है। और इसमें कियानो रीव्स और सांड्रा बुलॉक भी है। अब मूवी का प्लॉट काफी डिफरेंट है, जहां केट और एलेक्स दोनों एक दूसरे से लेटर एक्सचेंज करते हैं और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि उन दोनों की जिंदगी 2 साल आगे पीछे है, यानी कि एलेक्स 2 साल केट से पीछे है। अब दोनों का मिलन होगा या नहीं, इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और ये मूवी बहुत ज्यादा इमोशनल भी है और इसमें आपको बुरा भी लग सकता है और एंड में खुशी भी बहुत ज्यादा होगी। और इससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है, जिसे आप चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 1 पे माय पर्सनल फेवरेट द नोटबुक, जो कि एक मास्टरपीस रोमांटिक ड्रामा मूवी है। और मुझे पता है कि काफी सारे लोगों ने इस मूवी को देखा होगा जिन्हें रोमांटिक मूवीज देखना पसंद है। और मूवी में हमें रियान गोसलिंग और रेचल मैकएडम्स भी नजर आई थी। अब मूवी का स्टोरी ये है कि 2 टीनेजर प्यार में पड़ जाते हैं एक समर वेकेशन के दौरान। पर ये चीज लड़की के माँ बाप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो लड़का बहुत ज्यादा गरीब रहता है या फिर उनके स्टेटस का नहीं रहता है। और समर वेकेशन खत्म होने के बाद इन दोनों के बीच में एक इंसिडेंट हो जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। और इससे ज्यादा बताने की मेरी हिम्मत है नहीं स्टोरी, तो इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और ये एक मस्ट वॉच मूवी है। ये मूवी आपको हंसाएगी भी, रुलाएगी भी और इमोशनल तो करेगी। और हाँ, ये आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग भी देगी एंड में। और मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगी कि ये मूवी आप जरूर जाके देखें। और ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है। तो एंड में यही कहूंगा कि मुझे पता है कि आप में से कई लोगों को इन मूवीज के बारे में नहीं पता था, या अभी जाके पता चला होगा, या फिर कुछ मूवीज के बारे में आपको जरूर पता होगा। और आपके मन में भी ये सवाल होगा कि इन सारी मूवीज को हम डाउनलोड कहां से करें। हालांकि काफी लोग डाउनलोड कर सकते हैं अलग अलग वेबसाइट से, टेलीग्राम से। पर अगर जिनको स्पेसिफिक लिंक्स चाहिए, वो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाएं, मुझे फॉलो करें और डीएम करें। मैं आपको लिंक्स दे दूंगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। और ज्यादा खुशी मिल रही है देखकर, तो वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और हमारी एक रिक्वेस्ट भी है आपसे कि सारी मूवीज देखने के बाद आप इस वीडियो पर आकर कमेंट करके हमें बताएं कि आपको मूवीज कैसी लगी और हमारे सजेशन आपको अच्छे लगे या नहीं लगे। तो एंड में यही कहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी ऑन कर देना। खैर एंड में तो ये आप ही की मर्जी, आपको क्या करना है आपको पता है। और तब तक के लिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे टॉप 10 बेस्ट आर रेटेड कॉमेडी मूवीज के बारे में, जो है वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी मूवीज, जिसमें आपको जबरदस्त कॉमेडी के साथ साथ हॉटनेस का तड़का भी देखने को मिलेगा। जिसके लिए ये वीडियो तो बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है और इस वीडियो को बच्चे बिल्कुल ना देखें। और हाँ, ये सारी की सारी मूवीज हिंदी में भी डब्ड हैं, जिसके लिए आप इन सभी मूवीज को हिंदी में भी देख सकते हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस टॉप 10 हॉट कॉमेडी मूवीज की लिस्ट को।
जब भी चाहो मैं तैयार हूँ। फिर कभी फुर्सत में। नंबर 10 पर है 2004 में रिलीज हुई मूवी द गर्ल नेक्स्ट डोर। मूवी की स्टोरी है एक 18 साल के लड़के मैथ्यू की, जिसको लगता है कि उसने अपनी लाइफ में अभी तक कुछ नहीं किया, उसकी लाइफ एकदम बेकार है। पर एक दिन उसके पड़ोस में एक सुंदर सी लड़की रहने आती है जिसका नाम होता है डैनियल, जिसे देखकर मैथ्यू को पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। पर मैथ्यू का एक दोस्त उसको एक गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है कि डैनियल एक एक्स पॉर्न स्टार है, जिससे चीज़ें कैसे बिगड़ने लगती है ये जानोगे आप इस मूवी को देखने के बाद। नंबर 9 पर है 2004 में रिलीज हुई मूवी टैड। मूवी की स्टोरी है जॉन की, जो बचपन में एक विश मांगता है कि उसके टेडी बियर में जान आ जाए, और अगले दिन ऐसा ही होता है, उसके टेडी में जान आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं 27 सालों बाद भी। तो एक दिन जॉन को एक लड़की से प्यार हो जाता है, पर वो लड़की टैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, जिसके लिए टैड और जॉन एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। तो अब जॉन को चुनना है टैड और अपनी गर्लफ्रेंड में से, जिसको जानने के लिए एक बार जरूर देखें इस बेस्ट कॉमेडी मूवी को। नंबर 8 पर है 2005 में रिलीज हुई मूवी द 40-year-old वर्जिन। मूवी की स्टोरी एक 40 साल के आदमी एंडी की, जो अभी तक सिंगल ही है, और इतनी एज होने के बाद भी अभी तक उसका कोई भी रिलेशन किसी लड़की के साथ नहीं रहा। जब ये बात उसके फ्रेंड्स को पता चलती है तो वो लग जाते हैं एंडी के लिए लड़की ढूंढने, जिसके बाद मूवी में क्या धमाल मचता है ये जानने के लिए देखनी पड़ेगी आपको एक बार ये मूवी। नंबर 7 पर है 2008 में रिलीज हुई मूवी व्हाट हैपन इन वेगस। मूवी की स्टोरी है दो लोगों की, जॉय और जैक की, जो जाते हैं वेगस में पार्टी करने के लिए। दोनों वहां बहुत ही ज़्यादा पी लेते हैं, और जब वो अगले दिन उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली है, जिसके बाद उन्हें किसी रीजन से 6 महीने तक एक साथ ही रहना पड़ेगा शादीशुदा बनकर। जिसके बाद आगे मूवी में क्या क्या धमाल मचता है ये सब जानोगे आप इस मूवी में। नंबर 6 पर है 2016 में रिलीज हुई मूवी डर्टी ग्रैंडपा। मूवी की स्टोरी जेसन और उसके ग्रैंडपा की, जो जाते हैं फ्लोरिडा घूमने के लिए, ताकि उसके ग्रैंडफादर भूल सकें उसकी ग्रैंडमदर की डेथ को, जो 2 हफ्ते पहले ही हुई थी। पर उसके ग्रैंडपा रहते हैं एक अलग ही मूड में, उन्हें चाहिए थोड़ा सा फन, जिसके बाद वो लग जाते हैं यंग लड़कियों के साथ फन करने के लिए। जिसके बाद तो मूवी में फुल्ली कॉमेडी का तड़का ही भरा पड़ा है। नंबर 5 पर है 2004 में रिलीज हुई मूवी यूरो ट्रिप। मूवी की स्टोरी है स्कॉट की, जिसे उसकी गर्लफ्रेंड उसके ग्रेजुएशन पार्टी वाले दिन छोड़ देती है। तो कुछ टाइम बाद उसकी एक जर्मन लड़की से ऑनलाइन बात होने लगती है, और एक दिन वो लड़की स्कॉट को मिलने बुलाती है। तो स्कॉट निकल पड़ता है अपने कुछ दोस्तों के साथ यूरोप की ट्रिप पर उस लड़की से मिलने। जिसके बाद मूवी में क्या क्या होता है ये सब देखोगे आप इस मूवी में। नंबर 4 पर है 2006 में रिलीज हुई मूवी लिटिल मैन। मूवी की कहानी एक शॉर्ट और ट्रिनी क्रिमिनल कैबिन की, जिसने एक डायमंड चुराया होता है, और उस डायमंड को पुलिस से बचने के लिए वो एक लेडी के पर्स में डाल देता है, जिसका नाम वेनेसा होता है। तो उस डायमंड को दोबारा पाने के लिए वो वेनेसा के घर में एक अनाथ बच्चा बनकर जाता है। जिसके बाद केविन और वेनेसा के रिलेशन में क्या चेंज आता है ये सब देखोगे आप इस मूवी में। नंबर 3 पर है 2017 में रिलीज हुई मूवी बेवॉच। मूवी की स्टोरी है एक लाइफ गार्ड की टीम की, जो अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होते हैं। तो एक दिन उन्हें पता चलता है कि उनके पास के एक क्लब में एक ड्रग डील होने वाली है, जिससे उस शहर के लोगों को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो वो लोग लग जाते हैं उस डील को रोकने के लिए, जिससे आप जानोगे इस मूवी में। नंबर 2 पर है 2012 में रिलीज हुई मूवी अमेरिकन पाई रीयूनियन। मूवी की स्टोरी शुरू होती है कुछ दोस्तों से, जो सालों के बाद मिल रहे होते हैं, जिनका रीयूनियन हुआ है बहुत सालों बाद। अब सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो चुके हैं, और वो याद करते हैं कि उन्होंने कैसे स्कूल के टाइम में कितना धमाल मचाया था, और वो लोग इस फन को दोबारा से करने का ट्राई करते हैं, जिससे आप जानोगे इस मूवी में, जो कि फुल्ली कॉमेडी से भरी पड़ी है। नंबर 1 पर है 2009 में रिलीज हुई मूवी हैंगओवर। मूवी की कहानी है 3 दोस्तों की, जो जाते हैं लास वेगस में बैचलर पार्टी करने के लिए, और वो लोग उस पार्टी में खूब ज़्यादा शराब पीते हैं। जब वो अगले दिन उठते हैं तो उन्हें कुछ भी याद नहीं होता कि उन्होंने पूरी रात भर क्या किया था, और उनका एक फ्रेंड भी मिसिंग होता है। जिसके बाद वो अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए लग जाते हैं, और उसी के बाद मूवी में शुरू होता है कॉमेडी का धमाल, जिसे देखने के बाद आप हंस हंस के लोटपोट जरूर होने वाले हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर इन मूवी से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।